Hello, everyone. Welcome back to our live session on East Diabetes with Famizi. Our topic this time is Know Everything About Carbs, Part 2. And yet again, we have with us diabetes nutrition expert Ami Shah. Ami, we are again very, very happy that you're here. And on Thank popular you. demand, we are here this time because there were a lot of people who wanted to, know more about the topic, and we didn't have enough time, in the last session. So And we we left realized that certain questions also which unanswered. were So unanswered, right? So we realized that this time around, we will take another session for our viewers and for our members. So let's start with our session. And I'm sure some of the questions will fall in the same territory as the live session before. But for our viewers who are watching this for the first time and missed our last session, I think this will be a good recap. So, Ami, since we are talking about carbohydrates, firstly, I want to know from you what is the function of carbohydrates and what does it do in our body? so carbohydrate is something which is present in all of our food, like most of the food which Indians consume. So it is Okay. one part of the major nutrients we say. We call macronutrients in our term. Hmm. So if I would say if we underdo that, we are missing out on the positive benefits of the vitamins, minerals, fibers Right, coming right. from it. And if we Huh. are overdoing it, it can lead to obesity. It can Hmm. lead to insulin resistance, ultimately affecting our sugars. Blood sugars, right. So, moral of the story here is that we need to consume it, but in a moderation. That is Okay. important because carbohydrate forms the baseline of our energy, the main source of energy. The first thing which gets digested in the body after you consume the food is the carbs. Hmm. So it Okay. gives the first line energy. So the Hmm. glucose is produced and it helps in giving us the energy. It is required for the functions of the cells and tissues. So if we Right. miss out on that, it's gonna definitely, affect our functions of the Cost us. body. Right. Right. So carbohydrates have been gotten a very bad name over the years कि नहीं खाना चाहिए मत खाओ low carb पे जाओ. But I would suggest even research has told अगर आप low carb खा रहे हो like less than 40% to 30% and Hmm. greater than 70%, there is a risk of mortality. बट Okay. अगर आप मॉडरेट कंजम्पशन कर रहे हो 50 to 55% के बीच में आपके टोटल कैलोरीज से, सो Hmm. इट इज वेरी गुड. इट विल हेल्प यू इन कीपिंग योर हेल्थ अंडर कंट्रोल एंड इवन द शुगर्स अंडर कंट्रोल. Okay. सो उसको बुरा टर्म मत करिए बट उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करिए. आई वुड से दैट. राइट, राइट. सो आई थिंक अमी, बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि फाइबर्स, फाइबर्स आर वेरी गुड फॉर योर बॉडी. सो आर दे ऑल्सो, do they also fall under carbohydrates? Are they a part of carbohydrates? डेफिनेटली. सो इट्स लाइक वन ऑफ द लेफ्ट आउट पार्ट की जो हमने अब तक उसको एम्फेसिस ही नहीं दिया है. हाँ. हम हमारे अगर हम हमारे रिलेटिव्स भी आके बोले कि आप ये कम करो, प्रोटीन ज्यादा हाँ. खाओ, फैट्स कम करो, और अ ले हाँ. पर्सन विल आल्सो नो अबाउट दिस. और अब हम्म. अभी लास्ट कोविड के टाइम से हमें वो पता चलने लगा है कि विटामिन कितने इम्पोर्टेंस है इम्पोर्टेंट है. हमारे लाइफ में कि इट्स गोना इंक्रीज योर एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अप द इम्यूनिटी. हाँ. बट फाइबर्स हम भूल गए कहाँ भूल कि जाते. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. इनफैक्ट हाँ. हमारा आईडीए लाइक आईडीए का भी एक पोजीशन स्टेटमेंट है, इंडियन हम्म. डायटेटिक एसोसिएशन, जिन्होंने टर्म किया है कि वी नीड एटलीस्ट 32 grams ऑफ फाइबर्स इन अ डे. अच्छा. जो हम यूजुअली मीटअप करते भी नहीं. मीन्स लाइक हाउ मच यू गोना ईट योर वेजिटेबल्स एंड सैलड्स एंड ऑल. So हम्म. fibers play a part of the carbohydrates. It comes under अच्छा. complex carbs also. And there अच्छा. are fiber foods. And it plays a very important role when it comes to controlling your sugars because it helps. It takes time to digest in your body, right? So it हम्म. दो चीज पे वो वर्क करता है. एक तो वो शुगर धीरे धीरे बढ़ाता है, दूसरी हम्म. वो बॉडी को ज्यादा काम पे लगा देता है. इसलिए आपको हम्म. सटाइटी भी फील करता है एंड इट विल अच्छा. प्रिवेंट यू फ्रॉम गेनिंग वेट एंड ओवर ईटिंग.
सो Hmm. फाइबर्स आर डेफिनेटली नीडेड फॉर योर बॉडी. सो अगर आप फाइबर्स में बोले तो वी ऑलवेज से कि आप खाना खाने बैठते हो तो सैलेड्स खाओ. Hmm. पहले सैलेड से स्टार्ट करो. क्यों? बिकॉज इट हैज अ फाइबर. व्हाट इट डज, इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट इन द बॉडी एंड इट Hmm. गिव्स दैट फीलिंग ऑफ फुलनेस. तो अल्टीमेटली तो आप ओवर ईट नहीं करने वाले नहीं हो. करते. कि ओवर द पीरियड्स हमने ओट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है क्योंकि उसके अंदर हाँ, भी फाइबर्स है. सो हम अगर फाइबर वो है। खाते हैं तो हम जब भी फाइबर मील आप खाओगे या कुछ सैलेड के साथ मील खाओगे, आपको तुरंत पता चलेगा दैट योर बॉडी इज टेकिंग टाइम टू डाइजेस्ट एंड द सेकेंड मील यू डोंट फील अर्ज ऑफ ईटिंग बिकॉज अच्छा, यू आर फुल. सो राइट, वो राइट। एग्जैक्ट टाइम पे ही आपको भूख लगेगी. सो दैट हुँ। इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ये डालें आपके खाने में. अच्छा, अगर आप पूछो तो कौन से फॉर्म में फाइबर्स जाने चाहिए, सो एक तो हमें वेजिटेबल्स है, सैलेड्स है, सूप्स है, फ्रूट्स, होल फ्रूट्स दैट आर हुँ, वेरी गुड अ सोर्स ऑफ फाइबर्स. ओके, ओट्स है, होल व्हीट फ्लावर है, दलिया है. सो ये सब में ब्राउन राइस है, सो विच इज लोडेड विथ फाइबर. ओके। अगर हम स्प्राउट्स बोले, होल पल्सेस बोले जिसमें फाइबर्स है. सो काफी टाइम अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ या डॉक्टर्स के पास जाओ, वो बोलेंगे आप ऐसी फूड खाओ जिसमें फाइबर्स मिले, प्रोटीन्स मिले, कार्ब्स मिले. सो दिस आर द फूड, ये डालना बहुत जरूरी है. अच्छा, ओके। सो अभी लेकिन ये भी बात सच है कि इंडियन मील्स आर मोस्टली कार्बोहाइड्रेट हेवी, राइट? तो हम कैसे मॉडिफाई करें अपने डाइट को या अपने स्नैक्स या ब्रेकफास्ट को, यू नो जिससे हम कार्बोहाइड्रेट कम कर सके अपने डाइट में? सी एक चीज तो पहले जब भी हम कोई भी हमें कुछ चीज आती है कि डायबिटीज आ गया या मोटापा है, तो पहले चीज बोलेंगे कार्ब्स बंद कर दो, आपको पतला होना है या आपकी शुगर्स कंट्रोल करनी है. पर वो 2-3 महीने चलता है एंड फिर नहीं होता है. सो हुँ, आपकी ये क्वेश्चन बहुत सही है ये टाइम पे कि हाउ हुँ, टू इम्प्रोवाइज ऑन दिस. इट्स अ राइट, नीड ऑफ एन आवर. जो राइट। हमें बचपन से खिलाया गया है, जैसे हम बचपन से पोहा खा रहे हैं, कि जैसे गुज्जूस लोग ढोकला खाते हैं, या फिर साउथ इंडियन दे हैव इडली एज देयर मेन्यू, और डोसा और हुँ, अनी डोसा. सो ये सब एक टिपिकल मेन्यू है जो हम बचपन से सबने खाया हुआ है. ऑल ऑफ सडन कल से बोले बंद कर दो, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. एंड इट कम्स विद कार्ब्स, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट. बट हुँ, व्हाट कैन बी डन, ऐसा नहीं है कि ये कार्ब के साथ आता है, इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वी नो. हम ये हुँ, खाएंगे हमारी शुगर्स तुरंत रेज होगी और हमें वो ग्लूकोमीटर पे भी दिखेगा, हमारे रिपोर्ट्स में दिखेगा. बट दिखेगा। इसका तरीका भी है कि ऐसा डरना नहीं है कि अभी ये खाना बंद हो जाएगा. हुँ, इनफैक्ट उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं. हुँ, फॉर एग्जाम्पल हम रवा देख ले कि उसमें जीआई ज्यादा है क्योंकि उसमें फाइनर ग्रेन्स है. हुँ, या पोहा है जो राइस से बना हुआ है, इसमें उससे भी शुगर्स बढ़ती है. तो अभी उसको ओके, कैसे मॉडिफाई करना चाहिए. पहले दैट तो इज़ आप वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हो. अगर आपको सिर्फ ऑनियन टमाटो वाला ही उपमा चाहिए बिकॉज यू आर हैबिचुएट टू ईट दैट थिंग, हाँ, तो हाँ, आप खाने से पहले यू हैव लिटिल नट्स. सो एटलीस्ट वो ओके, सटाइटी, आपकी जो फाइबर्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, उसमें से प्रोटीन्स मिल जाएंगे. सो इट विल सस्टेन योर शुगर रिलीज. सो वो प्रिवेंट करेगा आपकी शुगर्स को. अगर पोहा खा रहे हो तो स्प्राउट्स डाल दें, पनीर राइट, डाल दें. अगर इडली बना रहे हो तो ओट्स के साथ आपके बैटर में ओट्स डाल दें, वेजीज राइट, डाल दें. हमें मॉडिफाई करना है. हुँ, सिर्फ नॉर्मल व्हीट फ्लावर के पराठे है, सो लाइक एकदम रिफाइंड वाले आप खा रहे हो, तो उसको हुँ, स्ट्रेन किए बिना रोटी बनाए, और या उसके अंदर व्हीट ब्रांड डाल दें, या फिर आप वेजिटेबल्स डाल दें. सो दिस इज हाउ यू कैन डिक्रीज द हाई कार्ब फूड टू द मॉडरेट कार्ब्स. If you are अच्छा, eating a dosa also, if you cannot change the batter because that is your taste, so stuffing कर दे. जैसे राइट, पनीर वेजिटेबल्स का, स्प्राउट्स का, या फिर आप अंडा खाते हो, so you have one egg white before and then you have a dosa, राइट, or you have a sambar and a dosa. So this राइट, is your breakfast. Coming to your lunch, lunch में typically ऑफिस गोअर्स के पास 10 टिफिन नहीं होते लेके जाने के लिए, और इट इज नॉट प्रैक्टिकल. when राइट, we find it very practical on writing on the papers, but when we have to do it, it becomes difficult, right? डिफ़िकल्ट, So एब्सोल्युटली, some practical example में, अगर आपको रोटी सब्जी लेके जाना है, so make sure आप कर्ड लेके जाओ, रोटी सब्जी एंड दही के अंदर सैलेड डाल दो.
सब वो हम्म, पहले खा लो, एंड देन यू हैव सब्जी रोटी। और अगर राइस और आप सब्जी ही लेके जा रहे हो, सो प्रोटीन डालने के लिए आपने दाल सिर्फ स्प्राउट्स लेके गए, स्प्राउट सैलेड, और आपने कर्ड राइस ले लिया, या वेजिटेबल पुलाव एंड द कर्ड ले लिया, हम्म, या हम्म, फिर दलिया ले सकते हो, या पनीर वेजिटेबल पराठा है, दिस इज लाइक अ वन मील डिश। बट इफ यू आर हम्म, सिटिंग एट द होम और यू कैन कैरी द एट लेंथ योर फूड प्रोडक्ट्स, सो आप सैलेड्स लेके जाओ, दाल लेके जाओ, रोटी सब्जी। So you हम्म, start with the dal and the salad portion first, then you have a vegetable roti. So this is how you make your, complex meal. हम्म, इवनिंग का टाइम जो पूरा बुरा होता है हमारे सबके लिए, आप इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव भी देखोगे, 4-5 बजे सब खत्म होता है, सो आवर आवर कंट्रोल इज ऑन ओनली ऑन द फूड. So we want something which is very delicious, which is sugary, which gives us a, right, right, that spark. So उस टाइम पे हम्म, फ्रूट्स रखो, सो फ्रूट ऑल्सो कम्स विद वाइटामिन, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंड हम्म, उसके साथ नट्स रखो, या फ्रूट हम्म, मखाना है, या फ्रूट और जवार पफ्स है, so which is friendly on the pocket too. We don't want the right, diet to be heavier on the pockets. right, So right, वो affordable भी भी है। कर सकते हो। और हम्म, रात के खाने में अ गुड मील, जैसे ऐसा नहीं है फैंसी आइटम्स ही है, अगर आपके घर पे सैंडविच और सूप है तो वो गलत नहीं है, बट देन रिप्लेस योर ब्रेड टू दी होल फाइबर ब्रेड्स, अभी वो right, अवेलेबल होने लगे हैं, हाँ, हाँ, पहले नहीं था, अभी वो कंज्यूमर फ्रेंडली भी हो गया है, हो चुके हैं, अवेलेबल भी है। Stuffing, you absolutely, add the, if you're a non-vegetarian, you have eggs to it, or you have, हाँ, chicken to it, or if you are a vegetarian, you have a lot of veggies, and the soya hai, ab sprouts hai, beans hai, paneer hai, so the combination. So right, you have your favorite meal, but in the हाँ, revised way. जैसे पास्ता खाना है तो वो रॉन्ग नहीं है, बट आप राइस का पास्ता मत खाओ, यू हम्म, हैव द मिलेट वन, यू हैव right, किनोवा right, वन। right, ये फर्स्ट ये सुनने पे ऐसा लगता था कहाँ मिलता है, ऐसे क्यों, मीन्स आप बोल रहे हो पर मिलना भी चाहिए, बट हाँ, नाउ हाँ, इट इज इजीली अवेलेबल। इसलिए ये आप कर सकते कर हो, सकते अगर हैं, आप वो नहीं absolutely, चेंज कर सकते हो, कि यू कैन absolutely, नॉट चेंज योर राइस पास्ता बिकॉज इट चेंज योर टेस्ट, सो दूसरी ऑल्टरनेटिव है, वेजीज ज्यादा डालो, right, स्प्राउट ज्यादा डालो, या हम्म, पनीर डाल दो, so that's how you're not missing out on the taste of your normal pasta, taste, but right, you're right, right, making it a complex meal. So absolutely, सब solutions मिल जाएंगे, मिल but you सकते हैं, need a right guidance. Don't yeah, listen to the people who have not studied. I would say whenever you are in a doubt, go हम्म, to a correct registered dietitian. They will guide you, or a right, doctor who can give you the right knowledge to it. So you're right, not deviating yourself from your food, and you, end of the day फिर ऐसा नहीं लगे मैं सब छोड़ के मुझे जो खाना है मैं वो ही खाने मैं वही वाला खा सकती हूँ। I know, you remain motivated, I know. That is the So, key. that is the key. So हमारे पास एक क्वेश्चन भी है अभी, आई थिंक राघव वांट्स टू आस्क कि आफ्टर 7 p.m. should you not eat? No, so this is something which is, not for everyone. It depends upon what time you start your day. So if you are a early riser, so in a 12 hours you have to complete your meal. So that is a different scene. Hmm, But hmm. 7 p.m. for everyone is not practical. The Right. one practical thing is you should eat 3 hours before going off to bed, or maximum to 2 hours before going to bed. Do it. Hmm. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right. जाने से पहले आपने कुछ नमकीन खा लिया, डेजर्ट खा लिया, सो दैट इज नॉट द एडवाइजेबल थिंग। Advisable. Right. But Right. this, for certain people, of course, who are doing intermittent or who are looking forward for something other goals, it is Hmm. independent to independent. Hmm. So Hmm. based on the people's, concern, the food timings are given to them. Okay. All right. ऑल्सो हमें आई थिंक इन द लास्ट सेशन बहुत लोगों ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं पोमोग्रेनेट जूस पी सकती हूँ, क्या मैं शुगर केन जूस पी सकता हूँ. सो आई थॉट दैट वी शुड एड्रेस दैट इन दिस सेशन एंड फॉर वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देते हैं कि होल फ्रूट खाना अच्छा है या जूस खाना अच्छा है इन डायबिटीज़, और शुड यू हैव जूस और कंज्यूम जूस इन डायबिटीज़. So if when we consider the fruit juice, आप ही अगर आपको आइडिया हो तो अगर आप जूस बनाने जाते हो, तो 2 फ्रूट्स तो लगते हैं एक ग्लास को भरने के लिए, और आप हाँ, जब भी प्रैक्टिकली खाने जाते हो तो आप एक ही फ्रूट खा सकते हो। हाँ, हाँ. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इट टेक्स टाइम टू चीव।
इट हैज अ फाइबर रिटेन्ड इन इट। आप जितना भी बोलो मैंने तो छाना नहीं है, मैं तो ऐसे ही पी रहा हूँ, बट Hmm. इट बिकम्स दी हाई जीआई जो अल्टीमेटली आपके बॉडी में फास्टर एक्ट होता है और Hmm. आपकी शुगर्स बढ़ाता है। So Hmm. it is not good for the person who is fat also, and not good for the person who is who has sugars. Fruit juices are meant for whom? So if the person, so even with the diabetics, you are going for the workouts, long workout, or you're going for a the heavy running, that is the time you can have a juice. But when you can eat, why to break the fruit? Hmm. Eat the whole fruit so that it helps you in sustained release in your body, prevents your faster sugar rise, and keep your sugars under control. सो Hmm. Hmm. अभी सीजन भी आएगी, अगर मैंने काफी टाइम देखा है ओवर द इयर्स कि आफ्टर विंटर्स काफी लोग के एवनसीज बढ़ जाते हैं, व्हेन वी आस्क देम व्हाट वर दे डूइंग, सभी गाजर की सीजन आएगी, बीट की सीजन आएगी, सो दे विल स्टार्ट जूसिंग इट, Hmm. कि गाजर का जूस पी रहे, बीट का That's जूस yeah. पी रहे। Yeah. आप खाओ ना, खाने में कौन ना बोल रहा है, बट एटलीस्ट जूसिंग मत करो। Right. That will affect the average and ultimately will affect your health. Right. You eat, and whenever you, so if when you start to eat gajar also, it's gonna take one piece, like a one Hmm. small, and Yeah. Yeah. juices में कितना लगता है, like fruits and all काफी mix लगता है. करके juices आप बनाते हो। Right. So that is very important. Then there is no boundary कि आप ये fruit ना खाओ, वो fruit ना खाओ, but Hmm. only thing is don't juice it. Okay. And second thing is have it at the time when you are not eating your main meals. Okay. दूसरी चीज भी होती है जो हमको क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, which we might answer, we may have answered, but again I want to just clear it here, Sure. Sure. that don't have the fruits with your meals. Hmm. Keep it independent to the evening meals, or you have it in the mid morning, which is the ideal time. Hmm. अब Hmm. Hmm. मील के साथ केला खा लिया, फिर हम केले को जिम्मेदार करते हैं कि यार केले खाने से शुगर्स बढ़ी, बट Hmm. क्यों बढ़ी? क्योंकि आपने होल कार्ब इनटेक में ज्यादा एक्स्ट्रा डाल दिया। Right. उससे अच्छा आप गैप में खाओ, सो वो बेटर है, रॉन्ग Right. भी Right. नहीं Right. है। Right. So, राघव एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमसे, मैम कैन आई यूज जैगरी एंड थ्रेड मिश्री एट टाइम व्हेन आई वांट टू ईट स्वीट इंस्टेड ऑफ शुगर? So yes, you can use the jaggery and the mishri, but now again the timings are very important. If you say I want to eat, usually हमें sweet खानी है, खाने के साथ, तो of course that's gonna affect your sugars, prandial meals, breakfast ले लो, lunch या dinner में। आप independently खा रहे हो mid morning में या फिर evening में, so that's okay, but not exceeding more than 5 gram of jaggery or a mystery or a sugar. The राइट. ideal dosage should not exceed to 5 grams. मोर देन 5 मिनट्स. ओके. ओके. और एक डाउट हमारा लास्ट सेशन में भी आया था, विच आई थिंक वी शुड टेक द अपॉर्चुनिटी दिस टाइम टू एड्रेस दैट, इज कैन यू हैव मिल्क इन डायबिटीज? क्या आप, व्हाट इज योर टेक ऑन, if you should avoid milk or have milk, or how should you have milk, diabetes में? So usually milk has a sugar. So milk, if we say India के लिए milk is like a you know uh, a very good source of a protein and a high availability of the protein. So हाँ. अगर हम वो मिस आउट कर रहे हैं तो काफी चीजें हम वहां से ही मिस आउट कर रहे हैं। हम्म. Milk comes with a lactose sugar, which is very good for the brain development. It हम्म. has a calcium. It has, proteins, which is good for the bones and muscles. It has a vitamins. So it is a whole package of a balanced nutrition. अगर हम्म. हम वो miss out करेंगे, so we are हम्म. missing out on the many source of it. And majority of the Indian population have milk and milk products. राइट. Of course, there are people who have a lactose intolerant, जो हाँ. मिल्क के जो दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट। सो डाइजेस्टेड. राइट. वो हमें, अगर वो बंदे को है तो फिर आप मिल्क अवॉइड करो,
बट Hmm. इन अ वे किसी ने बोला और आप अवॉइड कर रहे हैं तो इट शुडंट बी दैट. Even Okay. in India, the research has been done that does the milk has an impact on the diabetes, but it has proved that milk doesn't have an impact. It helps in, it doesn't, it is independent of it. So Hmm. it's always better that up milk low, but again it has to be low fat, full fat milk nahi. मिल्क के प्रोडक्ट्स है, जैसे आप कॉर्ड ले सकते हो, योगर्ट विच प्रोवाइड्स एज अ प्रोबायोटिक, सो इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी. पनीर अच्छा. है, बटर Hmm. मिल्क है, so you should have it, you shouldn't be avoiding it. Okay. Okay. All right. And I think last time also we discussed, and this time also I think we should, highlight or talk about what is your take on how much carbohydrates you can or carbs you can have in your diet, and should you or should you not have carbs? For people who are overweight and people who have diabetes, क्या उनको carbs avoid करना चाहिए या उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए किसी तरह से? What is your final verdict on this? The final verdict is, okay, coming starting from carbohydrates, as I told when we started, it's a really needed for our body. Avoiding is not the same. If it is an individual perspective, whatever. If you are eating 2000 calorie a day, and Hmm. out of that your major component of food macronutrients is coming from carbohydrate, that is 70%, for example, Hmm. then that is wrong. That will affect your sugars, that will affect your insulin resistance, that will make you fat. But if you are eating that moderation, then it is perfectly fine. In a Hmm. day you should have at least 200, like 150 to 200, is, you should have the consumption. And again, it is individual perspective, so you have to see a nutritionist who will chart out your diet based on your requirement, and they will tell you how much is needed for you. Hmm. So that's very much important. Carbs are needed to keep you healthier, fitter, and energetic. Hmm. So Hmm. please don't avoid that. Have Okay. it, but always go for quality, not the quantity. Quality Okay. plays a very, very Important important word. role. So ये हमारा ये टॉपिक पे ए में रखने का एक ही मेन रीजन है कि choose the right quality of carbohydrates, which are very Hmm. important and which will prevent you from many troubles, or Hmm. lending you into the troubles will prevent. Okay. And so what are the, if you can cite like 5 worst foods that you should not have, जो तुम्हें बिल्कुल avoid करना चाहिए when it comes to carbs? So I would say not the sweets or pastries or bakery products, or Hmm. just up rice and you are just having a vegetables, or this are something, or only a idli and chutney, or a dosa and chutney, or a dhokla and chutney. So Hmm. this is something a very high carb thing. You should अच्छा. avoid that. Fruit juices or Hmm. only a bread butter. This is Hmm. something Hmm. which you shouldn't be doing it. Okay. So you And as we, huh. on contrary, then what are the 5 things that you should be adding to your diet, which are good So, as carbs? we spoke about, the quality is important. So, based on the quality, you should be adding a lot of vegetables, dals to your diet so that it add on. So, dal is a protein, but it comes with the carbohydrates too. Hmm. So, you add that into your meal. So, for example, if we have to talk about the idli chutney, you make it to sambar idli and a chutney. If you Hmm. have to talk about the bread butter, you have a vegetable paneer sandwich. If we have to go for the pulao, so you go for paneer soya pulao, so with Okay. the vegetables added to it. So this is how you can, if you are eating a maida roti, so switch on to the whole wheat roti. Rice Uh, roti ko switch off karo, or switch on to your jawar roti. So hmm. you have to get yourself corrected to what you are eating. First understand what you are eating, chart it out, then you decide that what is wrong, and then you go to the your normal food. So people feel हमने वीट बंद कर दिया तो हमारी शुगर्स कंट्रोल आ गई. ऐसा Hmm. नहीं है. यू अच्छा. यू स्टॉप एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू वीट, इसलिए आपकी Hmm. शुगर्स कंट्रोल होती है. Hmm. Hmm. So Hmm. Hmm.
wheat को culprit करके मतलब नहीं है. So wheat comes Mm-hmm. with a good complex carbs. It has a fibers. It has, vitamins, minerals. So which you should be eating it. But of course, everything has the moderation to be eating. Eating six rotis, sabzi and dal, and then you tell your sugars are going at a par is going to affect. That is definitely going to happen. So कितना Mm-hmm. quantity में खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, you need an expert's help over here. Right, right. As you said, I think that's very important. That quantity is very important. So, as we had even highlighted in our last session, moderation is the key. एंड जितना मॉडरेटली आप कर सकते हो अपनी डाइट में इंक्लूड उतना करना चाहिए. Now we also want to open the forum for the viewers if they have any questions. अगर आप लोग के कोई questions है related to diabetes or diet, please ask us any questions that you may have. If we can take in last time questions, if we have an access to it, we can do that too. Okay. We have access to those questions as well. I think we mostly covered the important questions, Hmm. which we kind of you know missed out in the last session. But if anyone has any other questions, please ask us. So, I mean, in fact, I had one doubt related to this. कि अगर हम moderation में carbs खाते हैं, is it possible to still lose weight if one is Yes, overweight and definitely. has diabetes? Definitely. You can lose weight. The only thing is when we cut down on the food, जब भी ऐसा लगता है कि कैलोरी डेफिसिट मीन्स हम लोग कट डाउन कर रहे हैं फूड को. तो हमारा जो इनटेक अगर आप देखोगे तो एवरी 2 आवर्स पे खाना बोला है, तो आप एवरी 2 आवर्स पे कुछ कार्ब्स ही खा रहे हो. तो हाँ. उसमें आपकी इंसुलिन की सर्ज बढ़ जाती है एंड दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम वेट लॉस. So Okay. here, when you go on calorie deficit, along with the carbs, the proteins are modified in such a way. Good fats are modified. Good fats in the form of nuts and oils, nuts and seeds have been added to it. Proteins में जैसे whole pulses या eggs या पनीर and all has been given to it. So Hmm. उस हिसाब से जो modify किया जाता है. So moderate carbs helps you in losing weight. So Hmm. Hmm. it's better, like it's nothing like कि moderate carb से कुछ नहीं होता है, but it helps us. Right, right. Okay, so we have a question from Ankit Agrawal. He asks, Hmm. which seasonal fruits can we have? I would say all the seasonal fruits. Now the season are of orange, the seedless orange, strawberries you can have. Hmm. You can have singoda is in the season, which is called as water chestnuts, जो Right, थोड़े टाइम के लिए ही आता है. So you right, can right. have that. Have Huh. I would say have all the seasonal fruits, but just avoid the juicing. That is important. That is very important. Right. And Raghav has also asked us what he can eat or drink in case there is high pollution level. So you can, so antioxidants are important to prevent you from any kind of, low immunity and prevent you from any kind of a health conditions related to lungs when the pollution is there. Hmm. So you can have like, buttermilk. A thin buttermilk is a good drinking options. You can have infused water. That is very good. Eating में you can keep a chana with you. You can keep a nuts with you, fruits with you. If that is not possible, seeds are possible. So pumpkin seeds, chia seeds अभी पैकेट्स में आते हैं, या Right, right. मखाना है. So this is something you can have. Hmm. Hmm. Okay, that answers the question. All right, I think we'll wait for another minute or two. If
anyone who's watching, if you have any questions, please हमें comment पे पूछें. Okay, another question is, can we take jaggery chicky? So जैगरी चिक्की does come with a fat. जैगरी और सिंघी नहीं है, उसमें फैट भी है. है. So उसमें I wouldn't say कि you are allowed to eat, but because अभी winters में एक season आती है और सब हम्म. लोग खाते हैं, so आप वो again considering your sugar levels, the modification are done, but you really like it. A one small आइस क्यूब से भी छोटा साइज आप खा सकते हो, बट अच्छा. अगेन नॉट ड्यूरिंग योर आफ्टर योर मील्स की कुछ मीठा हो जाए जैसा, बट हैव हम्म. इट इन द इवनिंग और एटलीस्ट एट एन इंटरवल ऑफ 2 hours. Okay, all right. Another interesting question is, which flour is good to control glucose levels? Great. So, flour in the form of, which should has a high fiber. But for example, if you're eating a wheat roti, so you Hmm. don't want to change it to jawar, which is a fiber rich, or to the bajra. So you Hmm. can have wheat, but again you can add a oats to it, which add on to the fiber content, or you get a wheat bran outside. जो Hmm. आप रोटी के आटे में डाल दो तो उसकी फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगी. तो उसकी अच्छा. रोटी अगर आप खा रहे हो, so Hmm. that would be very good to control your prandial sugars, जो Hmm. खाने के बाद की शुगर्स जो बढ़ जाती है. अगेन क्योंकि उसमें फाइबर है, आपको जितना खाना है आप उतना खा सकते हो, ऐसा नहीं. क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है along with the quality. You can do the mixture of two things, wheat jawar. You can have the mixture of three things also, where you add little jawar bajra, चने Hmm. का flour, Hmm. sattu Hmm. flour जो हम, like you can add that and make You're it a right. mixture. You can add a soya flour with the wheat and jawar. So you Hmm. do the mixture of it is also fine. Okay. All right. Another member wants to know, how often can you have potatoes in diabetes or in sugar problem? Of course, not on a regular basis and not having a complete potato ka bhaji. Hmm. So potato is starchy on boiling. It get digested faster. Hmm. सो Hmm. इफ आपके घर में एक हैबिचुएट है कि सब सब्जियों में आलू जाता है, सो हाँ. मेक श्योर दैट यू हैव ओनली वन पीस ऑफ इट, नॉट द फुल, लाइक पोटैटो ज़्यादा इन सब्जी का. कम. सो दैट इज अलाउड. बट अगर Hmm. आपको मन है कि कुछ पोटैटो का सब्जी खाना है, सो आई Hmm. कैन गिव यू वन ऑप्शन ओवर हियर व्हिच इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस स्टार्च इन पोटैटो. सो Hmm. आपने पोटैटो रेजिस्टेंस स्टार्च इज समथिंग व्हिच इट एक्ट्स एज अ फाइबर, जो हमने बात किया, जो Hmm. आपकी शुगर्स को धीरे धीरे बढ़ाता है एंड प्रिवेंट्स यू फ्रॉम द सडन स्पाइक. Hmm. सो वो कैसे बढ़ सकता है आलू में? आपने आलू को बॉईल करा, उसको 24 आवर्स तक आपने रेफ्रिजरेट किया, कूलिंग किया, फिर इन अ मिनिमम टेम्परेचर, लाइक इन लोअर टेम्परेचर आपने उसको कुक किया, सो उसमें RS रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस स्टार्च. सो आप वो Okay. पोटैटो की भाजी खा सकते हो. सो Okay. दैट्स हाउ, इफ यू आर That's हैविंग अ very पोटैटो, good. या पोटैटो भाजी विद अ रोटी, इट्स फाइन. सो Okay. वंस इन अ व्हाइल इज फाइन. सो अगर आपका ऐसे मन है कि आज मैं पोटैटो भाजी और रोटी खाने वाला हूँ, या तो आप उससे पहले कर्ड ले लीजिए, या फिर आप कुछ फाइबर्स खा लीजिए, सैलेड्स खा लीजिए. Hmm. इट विल प्रिवेंट यू. सो अगर आप 3 रोटी और सब्जी खाने वाले, तो मेक श्योर कि आप 1.5 रोटी कर दे और पोटैटो खा लें, तो ऐसे भी आप कार्ब्स को बचा रहे हो. सो Hmm. दैट Hmm. विल ऑल्सो प्रिवेंट यू फ्रॉम द शुगर राइज. Okay. So हमने पहले we spoke about which flour is good for glucose levels. The same user has also told us that he is having or she is having wheat, barley, and gram mix. So could you Superb suggest him? combination. Okay, all right, you're doing great then. Yeah. Well, there were some really good tips in what Ami just said. I think all the viewers are going to definitely benefit from this session, and some things that they definitely didn't know before. So I think that's something really great. And this was a really great session, Ami. Thank Overall, you. it was, we addressed a lot of doubts. And at the same time, I think बहुत सारे जो मिथ्स होते हैं लोगों के दिमाग में कि कार्ब्स से एकदम दूर रहना चाहिए या कार्ब्स खानी खानी नहीं है, आई थिंक काफ़ी हद तक वो क्लियर हो गया है.
And thank you so much that you took out this time. And before you go, we have one last question that you can look at, which is कि rice कितना खाना चाहिए, या what is the right quantity of rice for a diabetic patient? So here, quantities are of course not more than one serving, that is 30 grams uncooked raw rice. But Hmm. again, how it's difficult to measure at the home level. But Hmm. what you can do here as a simple trick is that if you are a heavy rice eater, कि जहाँ पे आप देख रहे हो कि आप आधी 3/4 प्लेट राइस ले रहे हो, 1/4 सब्जी और दाल बहुत कम ले रहे हो, सो Hmm. ऑफ कोर्स वो आपकी शुगर्स को अफेक्ट करेगा. Affect बट करें. अगर आप 1/4 राइस लो, दूसरा 3/4 आपने दाल और सब्जी से कॉम्बिनेशन किया विथ अ कर्ड, सो Hmm. दैट राइस विल हैव जीरो इम्पैक्ट ऑन योर शुगर्स. Hmm. सो Hmm. उससे राइस बुरा नहीं बनता है. सो Okay. क्वांटिटी इज डेफिनेटली, अगर आप रोटी राइस दोनों मिक्स कर रहे हो, आप Hmm. रेगुलर बेस पे दो रोटी सब्जी और दाल खा रहे थे, और अगर अभी आज आपने दो रोटी राइस सब्जी दाल खाया, तो आपने वो कार्बोहाइड्रेट सर्विंग बढ़ा दी. Hmm. Hmm. तो Hmm. आपको Hmm. माइनस करना पड़ेगा दो रोटी को, एंड देन यू हैव टू ईट ओनली राइस. Hmm. सो Hmm. Hmm. दैट इज हाउ यू मैनेज योर कार्ब काउंटिंग्स. Okay. Well, all right. That's it for this session. And we are very, very thankful for you to share those Thank you. amazing tips. And we'll see you again very soon in another session, another topic. Soon. Excited. Uh, and all the viewers, please stay tuned. We'll be back with our East Diabetes Weekly Life next week. Thank you so much. Thank you, everyone.